एकदम से कैसा लिया? मैं इंडिकेटर डाल के रह रहा हूँ। इंडिकेटर है कि नहीं? एक सेकंड। हाँ तो फिर कैसा आया? Hey guys, welcome back to my channel. In this video, as you guys already saw the highlights, my RS457 was hit by a pickup truck from behind. So I'm going to explain the entire story and you guys are going to see the entire scenario, what happened after that accident and how that accident happened, where did it happen. So you don't want to miss any part of this video, and hence let's get started with the video. To start with, this incident happened 3 days back and it was a regular day. I was commuting to office. If you remember the last video which I uploaded where I spoke about the chain tensioner issue on the RS457, that day I was shooting that video while going to office, but just before the accident the entire video was completed and I switched off my GoPro and I had to take a U-turn in order to go to my office. The moment I was about to take that U-turn, this pickup truck comes from behind and hits me. And only one thing was there, that my GoPro was switched off because I was not recording the video that time. But after taking the hit, you can see how this guy has hit me. Because you guys know that RS457's turning radius is a little less, so I had to keep some gap between my bike and the right hand side, that is the divider, so that I could take a U-turn comfortably, and there was already a lot of traffic on the other side. So I left some gap, and the moment I was about to take this U-turn, this guy thought that I'm going to go straight. I don't know what he was doing. Probably he was using his phone. He was not at all paying attention on the road. I even gave right side indicator. It is not seen on the video, but the indicator was on. So the moment I was about to take that U-turn, suddenly I was hit from behind by this pickup truck, and then I fell towards my left, but luckily, good thing is that nothing happened to me, just few scratches on my right leg, and that's it. Nothing major happened to me, and that is the best thing. Bike and everything will definitely get repaired, but if something happens to me, there is no replacement for that. So good thing was that nothing happened to me and I was at a dead slow speed. I'll play that recording again and you guys see how this guy has hit me. एकदम से कैसा लिया? मैं इंडिकेटर डाल के रह रहा हूँ। इंडिकेटर है कि नहीं? एक सेकंड। हाँ तो फिर कैसा आया? कैसा आया? एक सेकंड, तेरा गाड़ी का नंबर क्या है? इंडिकेटर है तो पीछे से आके घुसा देता गाड़ी? नहीं इधर से ले लिया तो मेरे को यू टर्न लेना है ना, उसमें टर्निंग नहीं होता मेरा गाड़ी में, मैं कैसा लेना? अभी यू टर्न नहीं होता बोले तो आप एकदम इधर से लेने से मेरे को ये हो गया। तो इंडिकेटर नहीं देखता, ऐसे आके घुसा देता भाई। इंडिकेटर अभी मेरे को पैसा होना। इंडिकेटर है उसके अंदर, सब कुछ है, उसके बाद भी तू किया ऐसे? इधर से ले लिया तो मैं क्या करूं? तो मैं कैसा घुमाना यू टर्न? पीछे से आके तू मारेगा मेरे को? नहीं, इधर से आके आप यू टर्न लेना ना, इधर से लिए तो मैं कैसा करूं? एक सेकंड, तू चाबी निकाल गाड़ी का, चाबी निकाल। साइड में ले, तो कहीं नहीं जाएगा तू, साइड में लेंगे गाड़ी। ले साइड में ले, अब भी ले। तेरे को बताता हूँ, पूरा गाड़ी मेरा डैमेज कर दिया। मेरे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो मैं इंडिकेटर नहीं डाला गाड़ी में। इंडिकेटर देखा कि नहीं देखा? तब अगर तुम इधर से लिए तो मैं क्या करता? तो ब्रेक नहीं है तेरे पास, स्लो नहीं कर सकता? हाँ तुम इधर से लिए तो मैं क्या करता? मैं क्या करता हूँ? तो ब्रेक मारना ना गाड़ी में। फुल स्पीड में आके पीछे से कैसे मार दिया? मैं 10 का स्पीड में था। कितना स्पीड में था तू बता? कितना स्पीड में था? तो लेफ्ट लिया ना? हाँ तो इधर से लेफ्ट क्या गाड़ी? तो फिर तुम एक ही दम लिया तो मैं क्या करता? तो मैं क्या करूँ? वहाँ जाऊँ क्या? यू टर्न यहाँ नहीं है, वहाँ जाऊँ मैं? सही बात है साहब, मगर तुम मैं यू टर्न ले रहा सर, मेरा इंडिकेटर भी ऑन है, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। इंडिकेटर डाल के यू टर्न ले रहा हूँ, पीछे से मार दिया मेरे को। बोल रहा है कि इंडिकेटर नहीं देखा बोल के। तो यू टर्न लेने के लिए मैं यू टर्न लूंगा ना इधर? नहीं इधर इसमें सर आप लॉन्ग लिए बोल रहे हो? नहीं सर, एक सेकंड, यहाँ से गाड़ी यू टर्न होता क्या सर? यहाँ से गाड़ी यू टर्न होता क्या सर? हाँ इसमें हैंडल नहीं मुड़ता, आप आके चेक करो सर एक बार, हैंडल नहीं मुड़ता। तो मैं पहले इंडिकेटर डाल दिया, इंडिकेटर नहीं डाला तो मेरा यू टर्न मेरे को लेना तो मेरा डैमेज हो गया सर, गाड़ी मेरा डैमेज हो गया। तुम इधर से लेके डैमेज हो गया।
सर एक मिनट सर, मैं इंडिकेटर ऑन था, कैमरा में रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें इसमें सीसीटीवी भी है सर, इसमें अगर आपको डाउट है ना, मैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ सर। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है गाड़ी में, मैं दिखाता हूँ। बाइक में कैमरा है, बाइक में भी कैमरा है सर। हाँ पीछे मेरा गलती रहा तो हाँ अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ अभी, रुकना तू रुक। यहाँ मार दिया आके। हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अब भी डाउनलोड करता, टेंशन मत ले, किसका गलती है पूरा दिख जाएगा, ठीक है। हाँ अपना गलती पहले एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसा। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप इधर से थे ज्यादा इधर। अरे मेरे को यू टर्न लेना है तो 1-2 फीट तो लेफ्ट में रहता ना गाड़ी, मेरे को पैर में भी लग गया इधर। सर मेरे पास कैमरा है, बाइक में सीसीटीवी है, उसमें रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा सर, उसका गलती है। अभी पीएस वाले आ रहे हैं, हाँ बात करो। आपका कैमरा रिकॉर्डिंग है, हाँ उसमें भी रिकॉर्डिंग है, इधर भी है। गलती है तो आपको आपका डैमेज को देंगे, हाँ। तो केस होगा, कंप्लेंट होगा। हाँ सर उसमें रिकॉर्डिंग भी है, स्पीड भी रहता है सर, मैं कितना स्पीड में था, स्पीड भी रिकॉर्ड होता है उसमें, डैश कैमरा है सर। आगे दो बात कर। हाँ अच्छा हुआ ये था बोल के बच गया, नहीं तो मेरे को जोर से लग जाता था, पैर पे गिरने वाला था गाड़ी में, बच गया इधर। देखो पूरा गाड़ी गिर गया मेरे ऊपर, एकदम बहुत स्पीड में मारा सर, स्लो भी नहीं था, स्पीड में था। स्पीड कहाँ से आते हैं जी, मैं लेफ्ट टर्न लिया वहाँ, स्पीड कहाँ से आते हैं, तुम ही गलत आके, मेरे को गलत भी नहीं है ना इसको। ये सेफ्टी गाड़ी लगा है सर, यही है सेफ्टी गाड़ी, ये नहीं रहे तो और डैमेज होता था, ये मैं फिटिंग करवाया, नहीं तो। और थोड़ा बाहर निकालो उसको, क्यों बोले तो पूरा गाड़ी का वेट घुटने पे गिरा तो घुटना डैमेज हो जाता आपका। हाँ लेकिन उसके लिए ही मैं ये लगाया सर, ये नहीं रहे तो ये डैमेज हो जाता था, उसके लिए लगाया मैं। ये बेंड हो गया मेन पूरा, ये चले गया, ये चले गया इधर। मेरे पास कैमरा है, अभी दिखाऊंगा, गलती किसका है मालूम हो जाएगा। So as you can see, I was at dead slow speed because of course it was a U-turn. I was less than 10 kmph of speed. Even the speed is noted on the dash camera. And once I was hit by this guy, I immediately stood up, and then I saw this guy is putting blame on me and he is arguing with me instead of accepting his own mistake or trying to check on me, how is my condition. He did not even come out of his vehicle seat. So I got really furious on him. That's when I decided to switch on my camera. That's why if you see, the argument has already started by the time I switched on my camera, and then this guy is putting blame on me. Till the time the cops arrived, he was not ready to accept his mistake because he was saying that I took a long U-turn. Of course I have to take a long U-turn, but didn't I give the indicator? Was I at a high speed? Did I brake suddenly? Nothing. He ignored everything. He just went and hit me. By the time he hit me, he did not realize before hitting me that something is there in front of him. Only after hitting me, he has stopped his vehicle. So after that, you can see what happened, and you see the entire conversation, how this guy was arguing with me, and after that I'll narrate the story what happened after that. So now that you have seen how this guy was arguing with me, the traffic cop came immediately, and initially the cop was taking neutral stand because of course he did not know what has happened. I am saying that I am not at fault, that guy is saying he is not at fault. But then when he gave him information to the control room, there was a enforcement van. There were other 2 cops who came in that van to monitor the entire situation. They took care of this entire situation. So I downloaded the footage which you already saw in this video, both the front dash camera and the rear dash camera, and I showed it to the cops. Then they agreed that yes, I am nowhere at fault and this guy is at 100% fault. Then the cop said, what do you want? I said, this guy should be taught a lesson and I want him to pay for my expenses. To be frank enough, I wouldn't have asked him a single penny if that guy had accepted his mistake and told me sorry in the start itself. Rather than accepting his mistake, he started blaming me. That's when I decided I have to teach him a lesson, or else he won't understand what mistake he has done. So I told the cops that I want him to get my vehicle repaired, and you can see what the damages which has happened to my motorcycle. Guys, my bike has got damaged. Left side you can see this one got bent, but luckily the frame sliders were there. This saved the fairing, and there is a few scratch over here and there is a scratch over here as well.
I think I'll have to claim the insurance. I have called the cops. I'm going to take this car to the police station. His number is 0218, and I'm recording this video because I want to take it as a proof. And even on my bike, the dash camera recording is there. I'm going to show this and put a police complaint on this guy. This guy has done a damage to my motorcycle. Even this has been removed. You can see everything. It looks like this. I think there is some damage over here, but that's okay. But here nothing got damaged, this part, and mainly this thing got bent, and my leg also has taken damage because the bike fell to the left. My right leg got scratched over here. So after that, the cop seized his vehicle and asked him to come with me to the service center to check what is the damage repair cost. So I asked him to sit beside me, and now I am taking him as a pillion towards the service center, because the service center is on my way to office. From the place where this accident happened, the service center is around 6 to 7 kilometers from that place. So I just made him sit behind me as a pillion, and I was continuing. And after this, his tone has entirely changed. Previously he was arguing with me, but after that, after he saw that it's his mistake and he cannot escape, and even the cops started supporting me, he started begging me. He asked me to forgive him, but I was clear that I'm not going to forgive him. And you see how this guy changed his attitude after seeing the footage when I'm taking him to the service center. सेंटर में आके बात करो। मैं ना लूट रहा हूँ, ना मैं पैसे पूछ रहा हूँ। मेरे को पैसे से मतलब भी नहीं है, मेरे को खाली गाड़ी रिपेयर होना है। आपको दुआ लगती बोल रहा हूँ भैया, मैं दुआ में हमेशा याद रखता हूँ आपको। मुसलमान हूँ मैं, अजीज़ है मेरा नाम, दुआ में हमेशा याद रखूँ मैं आपको भाई। भैया मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आपका आप अगर उस समय मेरे से ढंग से बात करते, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप कैसे बात किए मेरे से। आप अपना गलती नहीं माने, उल्टा मेरे को ब्लेम करे, मेरे को मार के, ठीक है। वो अपना गलती तो नहीं मानते। पूरा गाड़ी मेरा डैमेज कर दिया। मेरे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो मैं इंडिकेटर नहीं डाला गाड़ी में। इंडिकेटर देखा कि नहीं देखा? तब अगर तुम इधर से लिए तो मैं क्या करता? तो ब्रेक नहीं है तेरे पास, स्लो नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम इधर से लिए तो मैं क्या करता? सुनो, मैं बोल रहा हूँ मेरी गलती है। आपको गलत तो कुछ भी बात नहीं करा ना साहब, मैं बोलो गलत ही बात करे मेरे से, इसलिए मेरे को गुस्सा है, नहीं तो मेरे को गुस्सा नहीं आता था। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता। अभी जो भी है सर, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। सर्विस सेंटर चलो, वहाँ पे जो वो लोग बोलेंगे, मैं पूछने का नहीं है, उनसे बात कर लो डायरेक्ट। जो वो लोग बोलेंगे, नहीं मेरे को मतलब नहीं है। मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को फोन करो, और अगर कुछ कम हुए तो मैं डाल दे। तुम बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो खाली पीली हो जाता बड़े। इतना मेरे को मार के मेरा कितना टाइम खराब होगा? आप 1 घंटे के लिए इतना परेशान हो रहे, मेरा कितना टाइम खराब होगा? माफ करो भैया प्लीज। इसमें माफ करने का क्या है? सिंपल है, वहाँ जाना है, पैसे देना है, निकलना है, बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैर पर तुम चुपचाप चलो। आपके पैर पर तुम बोल रहा हूँ, गलती हो गई, माफ करो। मैं ऑनलाइन मार देता हूँ साहब, मेरे पास 1000 रुपये है। मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ चलो, जो वो बोलेगा उतना पैसा दे देना, चले जाना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उधर जाके आने में मेरे को बहुत ये हो जाता, मेरी ड्यूटी चले जाता। तो मेरा भी तो ड्यूटी मिस हो रहा है, मैं भी तो ऑफिस जा रहा था, मेरे को ऐसा हो गया, मेरा क्या मतलब? मेरा भी तो ड्यूटी मिस हो रहा है ना। मेरे को भी अभी ऑफिस में आके बताना पड़ेगा क्यों लेट हुआ। मैं ऑफिस ही जा रहा था। मैं, मेरी गलती हो गई, माफ करो बोल के बोल रहा हूँ आपको, माफ करो ना भैया प्लीज। माफ करने लायक वो गलती नहीं है, आप जैसे चला रहे हो वो गलती है। और अगर उसका अगर नहीं हुईगा आइंदा से, मैं देख समझ के, आप मेरे को एक नसीहत दिए सर का हो जाता। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पैर पर तुम बोल रहा हूँ, प्लीज भैया नको लेके जाओ भैया। मेरे को उधर लेके गए तो काली पीली मेरा ड्यूटी चले जाता। कुछ नहीं होगा वहाँ जाके, इतना तो करना ही पड़ेगा। ये इससे मैं कुछ नहीं है, मैं सबसे कम चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? कोई ज्यादा भी नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे छोटा चीज पूछ रहा हूँ। कोई दूसरा सिटी नहीं जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। आपको उधर जाके आने में काली पीली मेरे को ये हो जाता। भैया प्लीज मेरा नंबर ले लो आप। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा लाइसेंस भी होना है तो दे दूँ आपको। मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ। मेरा नंबर ले लो ना साहब, मैं कर देता हूँ। उधर गए तो मेरे को आ जाते पैसे, 1000 रुपये का किराया है, वो 1000 भी आते। मैं आपको 1000 रुपये अब ऑनलाइन मार दूँ, आप मेरे ऊपर केस कर सकते। मेरा वीडियो भी है आपके पास, मैं नहीं दिया तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे को उधर नको लेके जाओ आप प्लीज़। आप उधर लेके गए तो मेरी ड्यूटी चली जाती साहब। मैं क्या मेरे को कोई मतलब नहीं है, ड्यूटी जाए या जो भी जाए, मेरे साथ जो हुआ है उसका क्या?
सही बात है साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती हो गई, माफ करो बोलूँ ना साहब। मैं माफ किया करके मैं इतना थोड़े में छोड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बोल रहे आपको अल्लाह बहुत अच्छा रखो, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर मेरे को यही छोड़ो साहब प्लीज। नहीं, आगे 5 मिनट है बस, चलो वहाँ से चले जाना। आप उधर जाके आने में मेरे को खाली पीली कुछ चले आता, कुछ नहीं होता। ना बोले तो फिर महिला घर में बैठना पड़ता था प्लीज। 1 घंटे से कोई कुछ नहीं होता, फोन करके बोल दो एक्सीडेंट हो गया बोल के, क्या करेगा? एक्सीडेंट हुआ ना, बोलो कॉल करके एक्सीडेंट हुआ करके। नाउ दिस गाय इज क्राइंग ऑल क्रोकोडाइल टीयर्स, बट प्रीवियसली ही वाज नॉट एग्रीइंग टू इट। He should be taught a lesson. That's why I am not behind money. I know it won't cost much, but I want to take him to the service center. I want him to pay the costs. Why should I claim the insurance when it is not my fault? You might feel like I am not letting him go, but that's not true. These guys should be taught a lesson, and he is saying me all bullshit things. Hello. Hello. Hello sir, good afternoon sir. Good afternoon. सर प्रोसीजर दिए नंबर, गाड़ी एक्सीडेंट हो। हाँ, मैं अभी सर्विस सेंटर में ही आ रहा हूँ। ये जो मेरे को मारा है ना बंदा, उसको भी लेके आ रहा हूँ। जो भी है कॉस्ट उसको बताओ, वो पैसा देगा। So after seeing the footage, you guys can clearly see how this guy is changing his stand. Previously he was not agreeing to it, and now he is trying to compensate by saying sorry. And after that I decided that I'm not going to listen to anything. I have to take him to the service center. Then I went to the service center, and over there, when the service technicians saw my vehicle's condition, they took a test ride and they told me that the estimate cost is going to be around 12 to 13,000 because the left handlebar was touching the tank, which means that the left portion of the handlebar has got damaged. Not the triple clamp, but the left handlebar has to be replaced, and that is a major cost, somewhere around 5,000 rupees is what they said. And apart from that, the tail was also broken, even that needs a replacement. So estimated cost was around 12 to 13,000, and then this guy, he straight away said that he does not have that much money and he is not going to pay. I said okay fine, whatever you have, you give that amount to me, and remaining I will claim my insurance and I will get my vehicle repaired. And I also told him that if my insurance gets denied, then I will have to catch hold of you again, and if I call you back, you have to lift my call, or else I will file a police complaint against you. Now this guy got threatened real time, and see what this guy started saying. I reached here at the Motorplex Hyderabad service center, and these guys are telling that the left handle has also got bent because it is touching the tank now. Previously it never used to touch. This has got bent, so I'll have to claim the insurance for that. This costs around 7,000 rupees. I'm not sure about the exact cost. पैसे दे दोगे तो मेरे को, तुम जाओ, जो करना है करो, मेरे को मतलब नहीं है। तुम जाओ, जो करना है करो। हमारे साथ चलो, चल के तुम कंप्लेंट दे दो, मेरे पैसे वापस दे दो। मैं क्यों दूं पैसे? मैं जो बोल के आया था मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को लिख के दो। क्या लिख के दूं? इसको मेरे को कंसेंट नहीं है। हाँ, मैं ले लिया पैसे बोल के, लिख के दे दो मेरे को पेपर। मैं बोल रहा हूँ ना, अपना इंश्योरेंस क्लेम करूँगा। नहीं, क्लेम करो भाई तुम। हाँ, क्लेम तो? करो, मैं हाँ, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, क्लेम कर लो, मगर हाँ, मेरे को लिख के दो। क्या लिख के दूं? मैं लिया पैसे इसका बोल के। वो पुलिस को भी मालूम है लिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग कैमरा ऑन है। बोल दो, तुम जो बोलना है बोलो, कैमरा ऑन है मेरा। दे दो ना लिख के। क्या लिख के दूं? हेलो भाई, हो रहा 10 मिनट। हाँ, बंद के है तार पट्टी बंद। अभी आप जो भी है मेरे साथ अभी चलो, अभी केस कर देंगे, क्लेम कर लो। आप नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा क्लेम तुम्हारे से जल्दी होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। 99% क्लेम होता, नहीं हुआ तब करेंगे वो तुम्हारा प्रोसेस जो भी है, और मेरे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे को गाड़ी एक्सीडेंट की है, पैसे दिए, ठीक है? वही बात आप मेरे को पूरा बोलो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। हाँ बोलो। भाई को बोले तो मैं भी बच्चे छोटे करो, जो करना करो, जो करना करो। परेशान करे तो आपको कुछ भी नहीं आता। मेरे को कुछ, आपको मैं परेशान कर, मेरे को सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को परेशान कर कुछ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम करना है मेरे को, ठीक है? मेरा गाड़ी में डैमेज हुआ, तुम मेरे को पीछे से आके मारे। कहाँ पे हुआ? बोयनपल्ली में हुआ। उसके बाद डैमेज हुआ। ये इधर आओ, इधर दिखाओ। अभी शोरूम वाला बताया ये टूट गया, ये देखो, ये टूट गया। ये इसका भी अभी पैसा आता, ठीक है? इधर दिखाओ, ये टूट गया, ये गया, इसका भी रिप्लेसमेंट है। ये हैंडल बार इधर दिखाओ,
ये हैंडल बार को टच हो गया, वो ट्रायल मार के आया टेक्नीशियन, तुम्हारे सामने आया, वो बोला ये भी रिप्लेसमेंट होता, खर्चा 12 से 13 हज़ार उन लोग अभी एस्टिमेशन दिए, मेरे को नहीं मालूम कितना जाएगा। तुम मेरे को 1500 रुपये दिए क्योंकि मैं बोला मेरा गियर रॉड ठीक करा बोल के, मेरे को उतना ही मालूम था। बट यहाँ पे आने के बाद मालूम चला ये पूरा डैमेजेस है। मैं तुमको पूछा पैसे दियो, मैं ये भी बोला पूरे मत दो, 5000 दियो बोला, तुम बोले 5000 नहीं है मेरे पास। मैं क्या बोला 5000 नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे को 1500 दिए, बाकी का मैं इंश्योरेंस क्लेम में करा लूँगा, उसमें मेरा भी पैसा लगेगा पर मैं लगा लूँगा। अगर 99% क्लेम हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता बोल के, क्लेम हो जाएगा। अगर क्लेम नहीं किया, उन्होंने कुछ भी बोला, मैं आपको फ़ोन करूँगा। अगर आप उसके बाद सपोर्ट करें तो ठीक, अगर आप सपोर्ट करें तो आपका इंश्योरेंस से क्लेम हो जाएगा, राइट। वो टाइम पे अगर आपका इंश्योरेंस से क्लेम हुआ, ये 1500 रुपये मैं दे देता हूँ वापस, मैं दे देता हूँ वापस, ठीक है। अगर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाए तो मेरे को कंपलसरी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ता, मगर आप मेरे को मेरा फ़ोन उठाना है। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो मेरे को सपोर्ट करना है, उतना ही बोल रहा हूँ मैं। और मेरे को आपको कुछ तकलीफ़ दे के मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ मिलने का नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, मेरा गाड़ी रिपेयर होना है बस। अगर मेरा गाड़ी रिपेयर हो गया मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो करने का जो भी है वो अभी करे तो हो जाता ना। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आपका इंश्योरेंस क्लेम करने थर्ड पार्टी नहीं है, आप फुल इंश्योरेंस है। करेक्ट। मेरा गाड़ी, आपका गाड़ी डैमेज नहीं हुआ ना, मेरा गाड़ी डैमेज हुआ, मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता, वो प्रोसेस है। वो क्लेम करने के लिए पुलिस FIR जरूरी है, राइट। तो वो सब मैं नहीं जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना रिपेयर करा लेता हूँ अपना इंश्योरेंस से। अगर ये नहीं हुआ तो वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, बोल रहा हूँ। मेरे को आपके ऊपर केस नहीं डालना, कंप्लेन नहीं करना है, समझ में आ गया ना, जाओ। So this was the entire incident, guys. After that, I just asked him to leave from that place. So finally he left, and he did give me 1500 rupees. 1500 rupees does not make an impact to me. That I don't even need that 1500 rupees from him, but it makes an impact on his side, because 1500 rupees is a lot of amount for him. So he needs to understand that he needs to be very careful while he's riding. Mistakes happen, anyone can make such kind of a mistake, but it is your responsibility to accept your mistake, tell sorry, and then move on. I wouldn't have chased him so much. I would have said be careful from next time. What else would have I said if he would have accepted his mistake in the start itself? But he did not accept his mistake, he chose to argue with me. That's why I had to I wanted to make him realize that this is what you have to face if you do such mistakes on road. And he is literally driving as if he doesn't care about anyone. He is having a pickup truck which is so big. It's good that nothing happened to me. If something might have happened to me, then no major injury happened to me. Of course the bike will get repaired, I'm not concerned about that, but more important thing is that I am safe. That is more important. So the update about the motorcycle is I have claimed the insurance, I have got the approval also. The bike is under repair in the service center. It will take around 2 to 3 days from now to get repaired, and till that time the service center, because they are very close to me, they have offered me their 210457, which is the demo vehicle over there. So I'll be using that as a replacement to my RS457, and next couple of videos you guys are going to see me riding the 210457. So that's one good thing. And also I told this guy that if I get the 100% claim from my insurance, I'm going to return this amount to you, because I don't want to keep such amounts with me. It's not good, and it might be cursed from him, so I don't want to take all those things. So definitely I'm going to return that 1500 rupees to him, but before that he should realize what he has done. And yeah, this is what I had to say. Of course the bike is going to get repaired and it is going to get back home, and this was the first accident that I had on my RS457. And that's why I say on Indian roads especially, we are at others' mercy. So it is very important to be safe. I see many people texting me that they have top end issues. They think that their motorcycle is not accelerating enough. They go on the open highway again and again and try to record it with the GoPro. What is the use of this, guys? I agree, even if your bike has lost top end, is it that important that it is more valuable than your life? Always give priority to life. Even if I feel that my bike has some issue at the top end, I would not want to test it just because of the sake of testing it.
because I know that the risk involved over there is a lot higher. Suppose if I'm going on a weekend ride and unknowingly I hit 170 or 180, of course these are not safe speeds, and I don't recommend anyone to hit that. But if by chance you hit those speeds, that's okay, because you are not doing it purposefully. The moment when you start doing it purposefully, that's when you tend to take more chances, and there the risk of accident increases. So that's what I wanted to spread this message, guys. Be safe on the road. Even if you are correct, you don't know how the other person is driving or riding. You'll be hit by them. And in this case, I had the Aoocci BX, which saved me because I had the dash camera which was recording continuously, and I was able to prove the cops that I am nowhere at fault. So this is a very handy feature to have even on motorcycle. I know if most of you guys who own the cars, you might have been using it since a long time, but even on motorcycles you need dash cameras like these. Even if you don't want to buy this Aoocci BX, buy some simple dash camera for your motorcycle, install it. If you think that you travel every day and you tour a lot, this is very handy. And if you want to install this Aoocci BX or the previous Aoocci C6 Pro, you can definitely purchase it using the link which is mentioned in the description section down below. It's a very good device, and it has proved its worth in this incident. And also I would like to mention about the frame sliders. The frame sliders took the entire impact, not even a single scratch on the left fairing. That's a very good thing. And it's kind of a testing which has happened for these frame sliders. There is a little scratch on the frame slider, but that's okay. But having frame sliders or not having it is secondary. The bike gets damaged, that's absolutely okay, but you should be safe. That is the number one priority you should have. Always give priority to life, guys. Bikes, cars, all these things are replaceable, but your life is not replaceable. Always remember that. With that, I would like to sign off from this video, and I will see you in my next video with the 210-457, and hopefully the RS457 returns back home in its original condition. So yeah, it's time to close this video. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, and also follow me on Instagram. My Insta handle is PrakashSuraj17. I put some awesome contents over there as well. And what do you think about this whole incident? Let me know in the comment section below. And also post any incident that you have faced like this before. Let's have a healthy discussion over it, and let's spread awareness regarding safety this time. With that, I will sign off from this video, and I will see you in my next video. Till then, bye-bye.